पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्षः। ॐ गणनान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो हस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति सः स जातो अच्छरिच्यत पश्चाद्भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते। ओम महागणपतये नमः। ओम मान्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम लंबजठराय नमः। ओम भावगम्याय नमः। ओम मंगलप्रदाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सत्यधर्मिणे नमः। ओम सुखये नमः। ओम महेशाय नमः। ओम दिव्यांगाय नमः। ओम विश्वदृशे नमः। ओम विश्वरक्षाकृते नमः। ओम कल्याण गुरवे नमः। ओम उन्मत्तवेशाय नमः। ओम अपराजिते नमः। ओम समस्त जगदाधाराय नमः। ओम सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः। विश्वेश्वराय नमः। ओम वरसिद्धि विनायक नमः। अष्टोत्तरशतनामावली समाप्तः। ओम गजकर्णकाय नमः। तुलसी पत्रं पूजयामि। ओम एकदंताय नमः। क्षोतपत्रं पूजयामि। ओम विकटाय नमः। करवेलपत्रं पूजयामि। ओम बिल्वदंताय नमः। विष्णुक्रांतपत्रं पूजयामि। ओम वटवे नमः। ओम बालचंद्राय नमः। मरुवकपत्रं पूजयामि। ओम विनायकाय नमः। ओम विनायकाय नमः। अश्वत्थपत्रं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः। बद्रीपत्रं पूजयामि। ओम गजकर्णकाय नमः। तुलसीपत्रं पूजयामि। ओम एकदंताय नमः। क्षोतपत्रं पूजयामि। ओम विकटाय नमः। करवीरपत्रं पूजयामि। ओम पटवे नमः। दाडिमीपत्रं पूजयामि। ओम सर्वेश्वराय नमः। देवदारपत्रं पूजयामि। ओम बालचंद्राय नमः। मरुवकपत्रं पूजयामि। ओम वरसिद्धिविनायकाय नमः। महानैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि। अमृतादिदानमशुत्तरोपोषणं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालयामि। पादयो प्रक्षालयामि। शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। वरसिद्धिविनायकाय नमः। महानैवेद्यं समर्पयामि। आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते। ओम श्री वरसिद्धिविनायकाय नमः। आनन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि। సందర్భంలో శ్రీ కుమారస్వామి కైలాసవాసి అయి పరమశివుని సందర్శించే తండ్రి మానవులు ఏ వ్రతం చేయడం వలన సమస్తమైన విద్య విజయ సౌభాగ్యములు పొందుతారో అటువంటి వ్రతాన్ని చెప్పవలసింది.